railways. And yeah, quick coaching for both the teams. But then Himachal Pradesh, yes, as we say, Pappu Kumar had played a Yuva Kabaddi series for Maurya Mavericks in the winter edition of 23 in Pondicherry. And it is good to see that he's representing his state. So he's only grown from Yuva Kabaddi series. That's what we say, where Yuva Kabaddi series, Aage ka rasta. Yeah, this is Gaurav. He's been caught yet again from the right corner. He's got for the bonus first, and after which the ankle hold Navneet from the right corner. जी बिल्कुल। और आगे की रास्ता की बात कर रहे थे, हम देखेंगे कि त्रिपुरा क्या करता है। यहाँ पर रिप्ले में देखा गया है कि किस तरफ आसानी से वहां फंसा लिया गया। 5 और 17। Absolutely. They have slowly started off to take off, but then the score difference is good for Himachal Pradesh Pana. And this is a Pankaj Rawal for us. Again, look at the synchronization in which the Himachal Pradesh defense is moving. And, ooh, what a brilliant ankle hold, Navneet. जी ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और देखिए त्रिपुरा का फिर से सफाया हो गया। सिर्फ एक खिलाड़ी वहां मौजूद है और क्या शानदार तरीके से वो जो पैर को पकड़ा, वहां पे कितना प्रयास रहा छुटाने का, हुआ नहीं। Absolutely. Brilliant grip. And again, an all out in favor of Himachal Pradesh. Back to drawing board is Tripura. But then, yeah, he has a nice reach, but then very, very slow footwork, Aman Dalal. जी हाँ, स्लो फुटवर्क। 22 और 5 का स्कोर, अमन दलाल वहां पे। और फिर से एक बार यहाँ देखने को मिलेगा कि केशव कुमार यहाँ पे रेड लगाते हुए। Yeah, he started off well. He's a left raider, but then start getting points from the when he raids from the right corner. Good one. Yeah, Keshav Kumar already got 5 raid points to him. Rahul has good speed, but then execution of the skill is also so important. Just not the speed skill, but then attempts for the attack is also important. जी हाँ, 22 और 5 ये स्कोर है हिमाचल के पक्ष में। और राधिका, सिर्फ 10 मिनट का खेल हुआ है और हिमाचल के पास है 22 पॉइंट, यानी कि एकदम एक तरफा मुकाबला चलता हुआ। Absolutely. And Pappu Kumar, I think he's been tackled here. Yeah, very, very prominent raider for Himachal Pradesh. But then will the referees consult before coming to a decision? Let's see what happened. He went so deep in to attack the left corner, but the right cover came in. I think it should be each 1 point because one of the defenders, the right corner, also anti-crossed. What is the verdict? जी हाँ, वहां पे त्रिपुरा को मिला है 1 पॉइंट। यहाँ पे डू और डाई रेड। गौरव यहाँ पर आए हैं त्रिपुरा की तरफ से और फोर्स तो लगाया, लेकिन वहां पर एकदम वॉल जैसा डिफेंस था और उसे तोड़ नहीं पाए हैं गौरव। 1 defensive point for Himachal and 2 points for Tripura because the lobby rules are still not in the nationals or the national games or the Asian games. Navneet, we see it in Yuva Kabaddi, we see it in Pro Kabaddi, but not in the Asian games or the nationals. So two of the defenders went first. I think that's where it is. जी हाँ। और क्या वो नियमों को आप फिर से एक बार साझा करेंगी? Absolutely. We have seen it in the national Asian games as well, Harshit. Sorry, Navneet. The lobby rules. If the raider goes self out without a contact into the lobbies and the defenders follow them, normally in Yuva Kabaddi or Pro Kabaddi, we term it as, the raider is out and the defenders will be safe. But then in the nationals or the Asian games, the rules have not yet changed. Hopefully, they should come into picture soon. If the raider is self out, he jumps into the lobby. If the defenders goes blindly with him, the defenders will be out as well. जी हाँ, ये ध्यान देने वाली बात। और कभी कभी कबड्डी का जो खेल है बहुत ही रोमांचक खेल, और छोटे छोटे ये जो नियम आते हैं वो चेंज हो जाते हैं।
और यहाँ पर तो एकदम बिल्कुल उठा लिया गया और ऐसा लगा ना कि जो Hmm. बारात में जो दूल्हा होता है उसे आप कभी कभी उठा लेते हैं। Absolutely. I think 20 points edge. Look at that. The Raider came in so blindly onto the left corner. Brilliant double thigh hold and the third all out point. That's so quick in favor of Himachal Pradesh, Navneet. जी हाँ, 7 मिनट का खेल बचा है, सिर्फ 13 मिनट के खेल आया है और जिस तरीके से खेल खेला जा रहा है राधिका, बिल्कुल एक तरफा। और जब कभी कभी हम लोग वन वे हाईवे पे जाते हैं ना और स्पीड कितना भी कर देते हैं, कभी कभी 120 140 150, उस स्पीड से उस गति से हिमाचल चल रही है। और हिमाचल वो एरिया है जो पहाड़ों के लिए जाना जाता है, वहां पर रोड बहुत Mhm. पतले होते हैं, लेकिन यहाँ पर हिमाचल को बड़ा रोड मिला है तो उसका फायदा उठा रही है हिमाचल। Absolutely, the infrastructure definitely had developed over the years for Himachal, beautiful tourist destination. But then, off lately, since last say about a decade or so, Himachal Pradesh have got the best of the kabaddi players, Navneet, especially the girls. If you look at the Indian squad, at least 5 to 6 of them come from Himachal Pradesh. जी हाँ, अक्सर अक्सर हम हरियाणा का नाम सुनते हैं और जब हिमाचल का भी नाम सुनते हैं तो टूरिज्म के लिए अक्सर जाना जाता है, लेकिन कबड्डी में नेशनल्स में देखने को मिल रहा है ये बेहद खूबसूरत। और खूबसूरत वहाँ पर है शिमला भी, और शिमला देखने Mhm. लायक। लेकिन हम चर्चा करेंगे, आप और कुछ बताइए वुमेन्स टीम के बारे में, किस तरीके से हिमाचल के खिलाड़ी वहाँ से आ रहे हैं। Absolutely, Ritu Negi or whoever, a lot of players who played the Asian Games as well, who got the gold medal for India just recently. I think a lot of players from there because they have this Sports Authority of India uh, set up for the Himachal Pradesh. I think a lot of cream players are there and they get 24/7, best of the talent will be uh, what do you say? They will be trained throughout the year, Navneet. जी हाँ, और इस तरीके की सुविधाएं रहती है, इस तरीके की जब फैसिलिटीज रहती है तो टीम निखर करके आती है। यहाँ पर निखरे हैं सुरेंद्र साहब, और 2 पॉइंट का इशारा यहाँ पर। Absolutely, Surinder Pal. Look at the powerful escape from the raider and presence of mind. He's also claiming who is out in that raid. This is Gaurav, a left raider, very, very slow, and again goes blindly onto the left corner, Navneet. Very, very easy giveaway points for Himachal Pradesh defense. जी हाँ, बहुत आसान थी गिफ, और बिल्कुल उठा ले रहे हैं। अक्सर ये कबड्डी में देखने को मिलता है कि नीचे पटक देते हैं, लेकिन बिल्कुल पैर को उठा करके। और जब कांटेक्ट ही नहीं रहेगा आपका मैदान से तो आप अपने मोमेंटम को कैसे बनाएंगे। Absolutely, this is Pappu Kumar. We know very well. He played for Yuva Kabaddi as well for Maurya Mavericks, and yeah, he's been good representing his state as well. Very, very tall, skillful raider, and he's only grown from Yuva Kabaddi. Definitely a brilliant talent identification. जी हाँ, युवा कबड्डी एक जहाँ से नर्सरी, जहाँ से पौध निकलती है खिलाड़ियों की, और वो हर जगह जा करके परचम लहरा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अमन दलाल वो परचम नहीं लहरा पाएंगे, उनको पकड़ा गया है। 10 और 36 का स्कोर, और हिमाचल को एक और पॉइंट वहां पर मिला है। रीप्ले में देखेंगे कि क्या हुआ। Brilliant corner coordination. When you know that the raider is going blindly onto the right flank, he went running for a back hold. And yet again, an all out points awarded for Himachal Pradesh. Very, very quick all out points, Navneet. Look at that. He goes deep in, touches, and escapes, uses properly the lobbies. जी हाँ, लॉबी का इस्तेमाल, और वो लॉबी का इस्तेमाल आप जितना करेंगे उतना फायदेमंद रह सकते हैं। परवीन नरवाल ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन उनको फिर से पटक दिया गया है, और लगातार यहाँ पर हिमाचल को पॉइंट्स मिलता हुआ। Hmm. Just not the raiders, but then the defense of Himachal Pradesh, be the covers or the corners, they have been outstanding throughout the last 15, 17 minutes. Surinder Pal, yes, in a defense of six, he's not greedy. He's just trying to attempt, and it should be a multi pointer or a 3 points. Corners came in,
There was a surprise tackle which went wrong. जी हाँ, राधिका, वहाँ पे 2 पॉइंट का इशारा हुआ है। और रिप्ले में देखेंगे किस तरीके से मोमेंटम का कबड्डी में जो प्रयोग किया जाता है। और रेडर अपने पैरों को पीछे ले जाता है, फोर्स को पीछे रखता है और अक्सर मध्य रेखा को क्रॉस करता है, वही देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट त्रिपुरा के लिए, 11 और 44 ये देखने को मिलेगा। और फिर से एक बार हिमाचल के लिए लंबे से लंबे कद के खिलाड़ी पप्पू कुमार। Absolutely. When you have the reach, I think he has made a right choice in choosing to be a raider, because that long limbs will definitely help a raider than a defender having long limbs and all. So it is definitely advantage for the raider, and he's taking very very good care of his team, getting a lot of points. जी हाँ, Yeah, और this is another डैंगलिंग हैंड player. की। जी हाँ, अनदर प्लेयर यहाँ पे। और नितिन चंदेल की बात कर रहे थे वहां पे। डेट Mm-mm. आया था, जल्दी से चला गया वहां पे। Nitin Chandel also got his high five, and he was the product from Yuva Kabaddi as well. So we take a pride in our players, and they have been performing very, very well. This is Keshav Kumar. Yeah, Keshav Kumar got 11 rate points, and 11 of them are touch points only, Navneet. जी हाँ, बिल्कुल। और टच पॉइंट्स कितना फायदेमंद होते हैं ना राधिका, क्योंकि आप एक Exactly. खिलाड़ी को बाहर भी करते हैं। That's the reason I think Himachal Pradesh have got four all outs in the first half itself, because they were able to reduce the men on the mat of the opponent. और राधिका, यहाँ पे हाफ टाइम हुआ है। मेरा एक आपसे सवाल है, क्योंकि आप कबड्डी Mhm. से लगातार जुड़ी हुई हैं। वहां पे देखिए पीछे में बैकग्राउंड में भी खेल हो रहा है, उस चर्चा पे बाद में आएंगे। Mm-mm. 44 और 13 रेड पॉइंट्स, 24 और 7 है हिमाचल के पक्ष में। टैकल पॉइंट्स देखिए 8 और सिर्फ एक त्रिपुरा। 4 बार ऑल आउट हो गई ये टीम और एक्स्ट्राज में 5 पॉइंट मिले हैं, वहीं पर बस एक त्रिपुरा आगे है। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, Mm-mm. आप दूसरे मैचों पे ध्यान नहीं जाता एज अ खिलाड़ी? Definitely not, because the pressure is definitely there for their team. So of course, nobody would matter who is playing where, because there are 30 teams playing in just 4 days in Avneet. So multiple matches do happen. जी हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, यहाँ पे देखिए केशव कुमार 150% स्ट्राइक रेट, 8 रेड लगाया, 12 पॉइंट्स। और हम लोग जब मैदान में खेलते थे ना तो लगभग मतलब 50 टीम एक साथ खेलते रहती थी, वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। Absolutely, because every team will, when all the teams, 30 teams have been divided into 8 pools, and you can see, witness more than 350 players, that too best of kabaddi players on these mats. So it would be a festive atmosphere, Navneet, in Ahmednagar, Maharashtra. जी हाँ, और जैसा कि आपने कहा, नॉस्टैल्जिया हो गया है आपको। अपने ज़माने के दिन याद आ रहे होंगे कि किस खूबसूरती के साथ आपकी टीम और दूसरी टीमों से भी आप मिलते थे। नितिन चंदेल यहाँ पे देखिए Mm-mm. 5 पॉइंट पूरा किया है उन्होंने। Absolutely. That's the defender we're talking about on the right corner. 71% tackle strike rate, brilliant ankle holds, 7 individual tackle points, no super tackles at all. The conversions are cent percent for that defender. जी हाँ, 100%। और यहाँ चर्चाएं चल रही हैं। Yeah. Half time, it's a 5 minute break for the teams to regroup and re-strategize where they're going wrong. Especially Tripura need lot of boosting from the coaching staff itself, and also team need to work as a unit. I understand, playing against a bigger team, definitely nervous Tripura team, but then this is a brilliant opportunity to represent your own state, जी हाँ, बिल्कुल। and कितना lot मज़ा of आता होगा कि and जी हाँ, lot आप of अपने talent scouting happens from this as well, Navneet. जी हाँ, टैलेंट स्काउटिंग ये क्योंकि नज़रें आप पे बनी रहेंगी। और अगर आप अपने टीम के अच्छे खिलाड़ी हैं, भले आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो आपको पिक किया Mm-mm. जा सकता है कहीं बड़ी जगह पर खेलने के लिए। हो सकता है Absolutely. आप अपने लीग्स में जाएं, इंडियन टीम Mm, में जाएं, कुछ भी हो सकता है यहाँ से। mm-mm. Absolutely. Normally, what happens is, in the state there would be inter districts,
And when you play the inter districts, after the last day, last match, after the presentation and all the championship trophies and all, they would give you the list of players who would be selected for the state. So the nervousness in the players will be so much from the districts, that who would be there on the for the training for the nationals. To getting trained is a big thing, and being in the 12 member team is a biggest thing, and playing on the starting seven is the best thing. So lot of scrutiny happens even before getting onto this mat. जी हाँ। और ये जो सिलेक्शन होता है और आप एक एक स्टेज पार करते होंगे, तो वो सपने भी आपके सामने, आंखों के सामने आते होंगे राधिका। Exactly. And once you get selected, yeah, and we also see Mohit Huda, coach of Murtal, is from YKS, Yuva Kabaddi series. Not only the players, but then the coaches are also getting a better exposure after the Yuva Kabaddi. So I think it's all in all a win for the team, the units, the franchisees, everybody. जी हाँ। और राधिका, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है सिर्फ 4 दिनों का है, इतने सारे मैच, Hmm. लगभग 60 मैच, शायद 57 मैचेस खेले जाएंगे। और Hmm. क्योंकि देखिए, आप 2-4 दिन में टेक्निकली तो आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से कोचेस का जो रोल होता होगा वो शायद मानसिकता के ऊपर ज्यादा और टेक्निकल स्किल्स के ऊपर कम। Absolutely, because after the inter districts and all, they will have ample time for the for the state coaching. So that's where they need to build the team, and once that is done, it's all up to the players how they execute it on the mat here. Because nothing much can be done, because each pool except for pool A and pool B, rest of the teams have four teams in each pool, and just for the pool A and B, you have three teams in each pool. जी हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है कि टोटल 30 टीम होगी। अगर सब में 4 रहता तो 32 होती, लेकिन यहाँ पे 30 Yeah. टीम। और बिल्कुल। Yeah, the codes have changed. Himachal Pradesh is on the left side. Now it is, yeah, Tripura. They're raiding. It's number 11 jersey, Pankaj Rawal from Tripura in a defense of four. No bonus opportunity. Attacks on the left flank. जी हाँ, और वहां पे उछले हैं और पकड़े गए हैं। हिमाचल प्रदेश लगातार यहाँ पर। देखना है यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा वेट करेंगे। Mm, lovely jump, but then the second layer of defense finishes it off. But the defender who has initiated the tackle, he did not lose the grip at all. जी हाँ, 46 और 13, सुरेंद्र पाल यहाँ पर। और यहाँ पर हेडबैंड लगा करके रखे हैं, और ये भी फैशन में रहता है हेडबैंड्स। मुझे याद है 90 के दशक में बहुत सारे खिलाड़ी ये हेडबैंड्स लगाते थे। अभी वो फैशन थोड़ा सा फिर से वापस आता हुआ। It could be injury, or it could be fashion or sentiment, whatever it is, but it is working for Himachal Pradesh. जी हाँ, बिल्कुल। अमन दलाल फिर से एक बार यहाँ पे त्रिपुरा के लिए 13 और 46 का स्कोर है। और यहाँ मुआयना करते हुए पूरे जो कोर्ट है उसका मेजरमेंट ले रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन को टच ही नहीं कर रहे। टच करेंगे तभी तो पॉइंट्स मिलेगा, तभी तो आपकी टीम बढ़ेगी। Mm-mm. And Navneet, which teams will go into the next stage is like, in every pool, the pool winner and the pool runner will go to the next stage. And the rest of the teams, it would be, goodbye. औ- औ- और और राधिका, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो 30 टीम है, आपका क्या विचार है? Mm-hmm. इंडियन रेलवेज के अलावा कौन कौन सी टीम है जो बहुत स्ट्रांग है? Maharashtra looks pretty strong for me. And and services is also one challenging team. I think these and Haryana will be good as well. Chandigarh will be good as well. जी हाँ, हरियाणा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में पवन शेरावत थे, उन्होंने पिछले
मैच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। और अगर आपको टीम चुननी पड़ेगी तो क्या आप फिर से इंडियन रेलवेज को चुनेंगे जो 5वीं बार लगातार जीत सकती है, या आपकी जो बाजी है वो दूसरी तरफ रह सकती है? For me, Maharashtra looks bit more stronger with the young squad because we see Aslam Inamdar and Akash Shinde, and also Harsh Lad is there, Aditya Shinde is there. I think the young team from Maharashtra is also very very solid contender for this, uh, 70th national championship, and also Haryana is also too good. जी हाँ, हरियाणा। और हरियाणा का नाम तो हर जगह रहता है ना, मतलब कि खेल के लिए अगर खेल की बात रहे तो चाहे कुश्ती हो, ओलंपिक्स में मेडल हो, हर चीज हरियाणा कमाल का है। Because in Haryana we have Jaideep and Mohit. That deadly cover combination is there, and जी हाँ, वहां पे सुपर रेड देखने को मिला है। और देखिए किस तरीके से अंदर तक गए, फिर जाके उनको पकड़ने की कोशिश, लॉबी का इस्तेमाल किया और मध्य रेखा को क्रॉस किया। 51 यानी कि हाफ सेंचुरी वहां पे हो गया है और 4 मिनट का खेल गया है। अमन दलाल वहां पर नजर आ रहे हैं त्रिपुरा के लिए, और अमन पकड़े जाएंगे। एक और पॉइंट हिमाचल को। और कितने पॉइंट का डिफरेंस होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महज 24 mm, मिनट के खेल में 51 पॉइंट। absolutely another all out. How many of them? Four of them, five of them came in the first half, and this is one more. Yeah, this is the tallest raider possible, I guess. Papu Kumar, number two jersey, crosses the block line. I think it's so easy for him to even cross the bonus line, but then he's playing for the team. जी हाँ, पप्पू कुमार। और रेस्ट ले रहे हैं, उन्हें पता है कि जो उनकी टीम की जो लीड हो गई है ना, वो बहुत बड़ी लीड हो गई है, तो थोड़ा सा वो रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है। Yeah. And Tripura. Of course, they are giving a fight, but then not enough at this big platform for the national level. This is Praveen Narwal for us. I'm sure with the surname, he should be from Haryana. But then what happens is also when if suppose Tripura as a state are not able to put in all the 12 players from the state itself, other players where a lot of kabaddi talent is there from Haryana or Maharashtra anywhere, that's an open ground for players to represent from any other state as well. जी हाँ, बिल्कुल। और शायद वही केस हुआ होगा, क्योंकि हरियाणा और त्रिपुरा में माइग्रेशन होने की संभावना थोड़ी सी Mm-mm. कम रहती है, लेकिन खिलाड़ी माइग्रेट कर सकते हैं जैसा कि आपने बताया। Absolutely. And also, if that particular raider is representing any of the department in Tripura, then of course he will be, eligible to represent the state as well. And this is Aman Dalal for us. Very, very slow in his footwork. No intention for an attack at all. Playing on the back line. Just seeing that, the score difference does not go long, Navneet. जी अब 42 हो गया, 42 का स्कोर डिफरेंस है। और मेरा एक क्विक इंटरेस्टिंग सवाल आपको प्रेडिक्ट करने को बोलूंगा कि हिमाचल प्रदेश Mm, जब ये 14 मिनट का खेल खत्म हो जाएगा तो कितने mm. पॉइंट्स पे जा सकती है? Because now they have slowed down the match, Navneet. Then they do not have the intention of getting that vast score difference at all. So I think around 70, 75 for Himachal Pradesh, maybe around maximum 20 for Tripura should be okay, because I think Himachal is now looking to just finish off the match by killing the red clock. जी हाँ, ये भी ज़रूरी है ना, क्योंकि आपको आने वाले मैचेस में फिट भी रहना ज़रूरी है। 4 दिन का बहुत ही फास्ट पेस्ड यहाँ पे मैचेस होने वाले हैं। डू और डाई यहाँ पर पकड़े गए हैं। क्योंकि देखिए ये भी हो सकता है ना कि त्रिपुरा कुछ पॉइंट्स लाना चाहेगी, उस कंडीशन में वो पॉइंट्स और दे देगी, भले रेड में नहीं मिल रहा है। हिमाचल देखिए यहाँ पे डिफेंस में आसानी से पॉइंट मिल गया है। Absolutely nice a frontal block coming in from the left cover. In a five-member defense, this raider does not need to do anything. He don't even need to go in for the attack.
Oh my God! Look at the gap between both the legs, Navneet. He can easily cross that 1 meter of bonus line and the walk line. जी हाँ, और चेहरे पे मुस्कुराहट यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे बस हाथ बढ़ा देंगे ना तो आसानी से टच पॉइंट्स ला सकते हैं वो। पर पप्पू कुमार वहां पर अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हुए, परवीन देखिए यहाँ पे निकल गए परवीन। But that was a lovely grip from the in position. But then he could not hold on to the grip, Navneet. Look at that. That was a solid grip, provided the left cover would have come. But that was not planned. So he did not execute at all. And it's a do or die raid for Papu Kumar. It should be an easy point for him. Brilliant one. Attacks for the bonus, but then a failed attempt from the in position of the left end for an ankle hold. Look at that. For easy bonus, he went in, but then a failed tackle from the left end. Yeah, this is Surinder Pal. Does not need to do much here because they're just waiting for the referees to blow the whistle for the you know completion of the match. They got a brilliant score difference here, and still 11 minutes in the game. जी बिल्कुल। और राधिका, आपने जैसा कहा कि शायद ये जो टीम है ये उतने अटेम्प्ट्स नहीं करेंगे, उसी के कारण ये जो आपने प्रेडिक्ट किया कि 70-75 तक रह जाएगा। वरना अगर ये अग्रेसिव खेल दिखाएंगे ना, और जिस तरीके से त्रिपुरा की एक कमजोर टीम है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद 90 भी वहां पर किया जा सके। Absolutely, but also Navneet, it's a contact sport, so nobody would love to risk it here because from here the Indian squad will be selected as well, mostly. So this is the biggest event before the national squad gets selected. So I think when you have a comfortable lead, do not risk yourself. Staying in a safe or physical aspect for the player is so important because unlike the private leagues and all, the Yuva Kabaddi or the Kabaddi, not much of support is being given on the nationals for the physical well-being of the players once injured. जी है 57 और 14। और यहाँ पे ब्रेक लिया गया है, यहाँ पे चर्चाएं चल रही है त्रिपुरा के खिलाड़ी आपस में वहाँ पे डिस्कशन करते हुए। लेकिन यहाँ पे डिस्कशन के लिए कुछ नहीं बचा है, बस आप पानी पीजिए। और जब आप पानी पियेंगे तो थोड़ा सा फ्रेश रहेंगे, वो ज़रूरी है। फिजिकल एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया जा रहा है। और सभी खिलाड़ी आसानी से बहुत सारा अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हुए। Absolutely, because they are playing in the open air. It's not an indoor stadium. Because to accompany so many matches in an indoor stadium is definitely not possible. So mostly nationals would happen in the outdoors itself. But then with the inclusion of the matter, the beauty is there in kabaddi as well, whether it's indoors or outdoors. जी हाँ। और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे तस्वीरें रुक सी गई हैं, और हम जल्दी ही आप सभी के साथ जुड़ेंगे। Absolutely, we are witnessing these matches on fan code. So it's a brilliant matches to watch on fan code as well because lot of the best of kabaddi players will be featuring in these 30 teams. So I think it's an important event for fan code as well because it's a one of the biggest events for kabaddi, if where India wide the best of the players will be representing. Yeah, जी हाँ। as we और say, this is the 70th Senior National Kabaddi Championship playing in Ahmednagar, Maharashtra, where Maharashtra team itself is one of the strongest teams for this season, for this senior national. So let's see, will the home team make it forward for this championship?
or जी any हाँ, other team, or the Indian Railways will make it again for fifth time on the trot? बिल्कुल राधिका, शायद इंडियन रेलवेज कमाल की टीम है। और मैं आपसे वो एनवायरनमेंट के बारे में जानना चाहता हूँ। वो मतलब मैं सोचता हूँ कि सारे खिलाड़ी आते होंगे, कितना मजा आता होगा। और जब ये मैच 10 बजे खत्म हो जाएगा तो खिलाड़ी यहाँ पे करेंगे क्या? जाकर के सो जाएंगे यहाँ पर, या दोस्तों Mm-hmm. के साथ मिलेंगे, लंच करेंगे, क्या करेंगे? आप क्या करती थी? After this, of course, after the matches, you get freshen up or you go directly to the dining hall, eat. That's where you meet the rest of the teams as well. That's where you get to meet lot of players. You love to watch them playing on the mat. And I'll tell you one instance. I was, say, playing the Bangalore National Games. Then we see a lot of, teamwork from northeastern states, Navneet, wherein the Manipur team, when you eat also, they do not, know, of course, the facilities weren't that great when we were playing, but then uh, we sit on a proper ground and eat. But then the Manipur team, what I witnessed was, they sit in a squatting position throughout the dinner time, and they form a big circle and eat. So that was one impressive thing which I have seen it in Manipur state as well. जी बिल्कुल, कल्चरल एक्सचेंज। और ये दर्शाता है ना राधिका, कि हमारा जो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री है, ऊपर से नीचे अगर देखेंगे तो लगभग 3200 किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो लगभग 3000 किलोमीटर। इतना बड़ा देश, इतने भांति भांति प्रकार के लोग, और जब कबड्डी में सारे वहां पर एक जगह आ जाते हैं, जैसे अभी अहमदनगर में Mm, आए हैं, तो आप ऑब्जर्व करते mm, हैं ना, क्या mm, मजा आता होगा। और मणिपुर की कहानी बहुत खूबसूरत। mm. Absolutely, and the young players get to witness, you know, their worshipped players on the mat. I think that's one big learning experience also the players gain from here, Navneet. जी हाँ, और क्या How आप कुछ often. कहानियां, जी हाँ, आप कुछ कहानियां सुना सकती है जिसमें कि जब आप एकदम बिल्कुल छोटी सी होंगी और आपका पहला बार सिलेक्शन हुआ होगा, और आप किसी खिलाड़ियों को वर्शिप करती होंगी? I'll tell you, um, yeah, from the national games itself, I have seen PT Usha representing Kerala state. I think that was the biggest moment for me when I have seen her very close. Where national games, you have all the sporting events happen. I've seen PT Usha this close to me. I think that was the fangirl moment for me when I was too young. जी हाँ, पीटी उषा, पिल्ला वुल्ला कंडी, थेक्का परम्बिल और उषा। और ये अक्सर हम ये सवाल भी करते थे स्कूल में कि पीटी उषा का पूरा नाम क्या है। और पीटी उषा, उन्होंने अपना जो हमारे देश का ध्वज है वो चारों